सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दो 2024 के आगाज में मुल्क की मईशत शदीद मुश्किलात का शिकार थी। बेल आउट के लिए IMF प्रोग्राम नागुज़ीर था। अब जब साल खत्म हो गया है तो मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। महंगाई 30% से कम होकर 5% हो गई है। शरह सूद 22% से कम होकर 13% पर आ गई है और रेमिटेंसेस एक्सपोर्ट्स में भी नुमाया इजाफा नजर आ रहा है। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि 2025 में हम पायदार ग्रोथ की तरफ जाएंगे। देखना है कि नए साल में पायदार तरक्की के हुसूल के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। वज़ीर ख़जाना का कहना है इंपोर्ट बेस्ड मईशत है। जब इंपोर्ट्स बढ़ती हैं तो डॉलर्स की कमी हो जाती है और बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला बन जाता है। फिर IMF के पास भागे जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि ग्रोथ एक्सपोर्ट्स की बुनियाद पर हो। ये कैसे मुमकिन होगा, इन तमाम मामलात पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब, जो कि अब जनरल सेक्रेटरी हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के, जिनसे हम ज़रा समझेंगे कि मईशत की बेहतरी के लिए या फिर मुस्तकिल इसके नताइज लेने के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए क्या करना होगा। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे ताजिकिस्तान के एनर्जी मिनिस्टर जुमा दिलेर शफ़कीर, जिनसे हम बात करेंगे। वो गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में थे, हमें उनसे बात करने का मौका मिला। CASA 1000 पर बात हुई, कुछ और अहम इशूज़ पर बात हुई, जिसमें पाकिस्तान और ताजिकिस्तान से मुताल्लिक ट्रेड वॉल्यूम क्या है, टूरिज़म का पोटेंशियल क्या है, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के ताल्लुकात किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ताजिक पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, ये हम आपको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दिखाएंगे। तो आई विल स्टार्ट विद यू मिफ्ता इस्माइल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ज़रा ये समझना है कि 2024 जब ये स्टार्ट हुआ तो जो गुफ्तगू थी मईशत के बारे में, जो माहौल था, अगर हम ये देखें ईयर एंड के ऊपर ये डेवलपमेंट कितनी एनकरेजिंग है, कितना कुछ बेहतर हुआ है मुआशी एतबार से इस साल के इख्तिताम पे, आपका इस पे तज्जिया क्या है? आदिल भाई, बहुत शुक्रिया आपका मदू करने का। गुजारिश ये है कि पिछले साल जो अफरात ज़र रहा है पाकिस्तान में वो 24% था, यानी कि साल में 24% से महंगाई बढ़ी थी। इस साल अफरात ज़र कम होकर 9% पे आ गया है। तनख्वाह इस तनासुब से नहीं बढ़ रही है लोगों की, ना पिछले साल 24% से बढ़ी है, ना इस साल 10% से बढ़ी है। तो पाकिस्तानियों की क़ुव्वत ख़रीद मज़ीद कम हो गई। इसीलिए जब हुकूमत कहती है कि अफरात ज़र कम हो गई तो लोगों को नज़र नहीं आता, क्योंकि उनकी क़ुव्वत ख़रीद मज़ीद कम होती जा रही है। और बिजली का बिल देने के बाद और टैक्सों का बोझ से जब निकलता है पाकिस्तानी, तो उसके पास इतने पैसे नहीं रहते आम पाकिस्तानी के पास कि वो बच्चों की अपने बेहतर तरीके से कफ़ालत कर सके और तालीम भी दे सके और सेहत का भी इंतज़ाम कर सके। लेकिन जो मजमूई तौर पर मईशत की जो मैक्रो इकनॉमिक सिचुएशन थी, जिसमें हम पिछले साल डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे थे, वो अल्लाह की मेहरबानी से अब वो ख़तरात टल चुके हैं। डिफ़ॉल्ट की कोई बात नहीं है, रुपए के अंदर कदर में कोई कमी नहीं आई है। तो ये कुछ मुस्बत चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की मुश्किलात जो हैं वो अब तक बढ़ रही। ठीक, तो मिफ्ता साहब ज़रा ये बताइएगा, अगर हम चलें मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स के कॉन्टेक्स्ट में ही देख लेते हैं, ये जब साल के एंड पर हम जहाँ आज खड़े हुए हैं, इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या मैसेज मिला होगा कि पाकिस्तान ने जो कमिटमेंट्स की थी उनको पूरा किया है, अपने इंडिकेटर्स को बेहतर किया। मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स के बेहतर होने से फ्यूचर में चाहे वो FDI हो या मज़ीद आपकी इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए स्टेप्स हों, तो दुनिया उसको पॉजिटिव वे में देख रही होगी। देखिए, अगर जहाँ तक ताल्लुक है तो पाकिस्तान का पिछले 15 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो तकरीबन 2 से 3 बिलियन की हमारी FDI आती है हर साल, और उतनी ही अब भी आ रही है। कभी थोड़ी सी कम हो जाती है, 2-4 साल पहले थोड़ी सी कम हो गई थी, कभी एक आध साल 2010-11 में थोड़ी सी ज़्यादा थी, मगर उससे ज़्यादा नहीं आती FDI। और जो FDI आती है वो पाकिस्तानियों को बेचने के लिए आती है। यहाँ पर $1 की FDI नहीं आती कि जो पाकिस्तान से कोई मसनूआत बना के बाहर बेच सके। पाकिस्तान में तकरीबन $45 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सालाना होती है, जिसमें से 2 से 3 बिलियन, जैसा मैंने गुजारिश करी, बाहर से आते हैं। बाकी 42 से 43 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तानी ही लगाता है।
तो जब तक पाकिस्तानी और सरमायाकारी नहीं करेंगे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ पे गुर्बत कम नहीं हो सकती। आज 10 करोड़ 50 लाख लोग खतरे गुर्बत के नीचे हैं। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हो सकती। यहाँ पे हमारी हर साल जो है वो 15-20 लाख मजीद हमको नौकरियाँ चाहिए जो नहीं होती, और मजीद 10-15 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो पाकिस्तान के बड़े मसाइल हैं। बिल्कुल बात दुरुस्त है कि मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन में जहां हम रोज डिफॉल्ट की बातें कर रहे थे और IMF से जहाद की बातें कर रहे थे, उनको आंखें दिखाने की बात कर रहे थे, वो छोड़ दिया है। लेकिन दुनिया अब भी ये देख रही है कि आपने जो IMF से जो इस एग्रीमेंट के अंदर भी वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए हैं। आपने जो टैक्स का कहा था कि जितना टैक्स जमा करेंगे वो आपने पूरा नहीं किया। जो आपने कहा था कि हम NFC अवार्ड तो हम कमीशन नहीं बना रहे, लेकिन नेशनल फाइनेंस पैक्ट करेंगे, उसके तहत कुछ अखराजात सूबों को दे देंगे, वो आपने नहीं किया। आपने कहा था हम पेंशन रिफॉर्म्स करेंगे, वो आपने नहीं की। आपने कहा था हम कुछ वजारतें डिवॉल्व कर देंगे सूबे को, वो आप नहीं कर सके। आपने कहा था कुछ वजारतें बंद कर देंगे, वो आप नहीं कर सके। आपने कहा था एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो सूबे लगाने के बाद शुरू करेंगे, वो आपने नहीं किया। तो IMF को किए गए बहुत सारे वादे जो हैं वो हमने पूरे नहीं किए हैं। अब जब जनवरी में IMF आएगी तो देखते हैं कि क्या बात होती है उसमें। अच्छा, ये जो आपने इशारा दिया है ज़ाहिर है शॉर्टफॉल का, ये आप अपने दौर में भी कहते रहे। अब जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की है, FBR को स्ट्रेट अवे क्रिटिसाइज़ किया है, कहा है बहुत करप्ट इदारा है, रिकग्नाइज़ किया है इस चीज़ को कि हाँ वाकई लोगों के बड़ी मुश्किलात और मसाइल होते हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को एड्रेस करना, क्योंकि FBR इतना ताकतवर है कि किसी वज़ीर ख़जाना को भी जो है वो नहीं चलने देता या उसको फैसले नहीं करने देता। चेयरमैन FBR तो रोते ही रहते हैं। सो FBR अलग ही पैरेलल वर्ल्ड है हमारा। टैक्स शॉर्टफॉल की भी आपने बात की। सो इसको आप कैसे देखते हैं, ये जो स्टेटमेंट आया है कमिंग फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर, हाउ डू यू सी दिस? देखिए, हमारे सूबे जो हैं वो कोई टैक्स जमा नहीं करते। जो भी हमारा टैक्स जमा होता है वफाक में होता है। सूबे जो है वो 12,000 अरब रुपया अखराजात तो करते हैं, लेकिन एक पैसा जमा नहीं करते। मतलब सीरियसली तकरीबन एक पैसा नहीं जमा करते, थोड़े बहुत 1,000-1,500 करोड़ रुपया जमा करते हैं। तो FBR आपका वाहिद इदारा है जो पैसे जमा करता है। अब उसके अंदर आपने ये कहा है कि हम तनख्वाहदार तबकों के ऊपर 38.5% टैक्स रखेंगे। हम जो बिजनेस करते हैं, जो इंडिविजुअल्स, प्रोप्राइटरशिप हुआ, पार्टनरशिप हुई, जैसे हमारे डॉक्टर्स हुए, लॉयर्स हुए, जो जोड़िया बाजार में या अकबरी मंडी में जो बैठ के, या शालमी मार्केट में जो बैठ के जो होलसेलर्स होते हैं, हम इनसे 49% टैक्स लेंगे, 49.5% टैक्स लेंगे, यानी कि इनकी आधी कमाई हम ले लेंगे। और हम कंपनी से 60% टैक्स लेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान का जो डॉक्टर है, जो लॉयर है, जो बिजनेसमैन है, जोड़िया बाजार में बैठा हुआ या शालमी मार्केट में बैठा हुआ या अकबरी मंडी में बैठा हुआ, ये आपको अपनी इनकम में से आधी इनकम दे देगा, तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप ज़रूर ये टैक्स रखिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि वो फिर इसके अगर हम इतना बेवकूफ़ाना ज़्यादा टैक्स कर देंगे तो वहाँ पर टैक्स इवेजन होगा, तो फिर आपको पाकिस्तान की सूरत हाल समझ के टैक्स रेट्स कम करने चाहिए। दो ये कि जब आप इस किस्म के टैक्स लगा रहे हैं जो कि स्कैंडिनेविया में होते हैं, यहाँ पे फिनलैंड में होते हैं, स्वीडन में होते हैं, नॉर्वे में होते हैं, तो वहाँ क्रेडल टू ग्रेव सर्विसेज मिलती हैं। वहाँ पे आप बच्चा पैदा होता है तो वहाँ से हुकूमत जिम्मेदारी उठाती है और उसकी कब्र तक की जिम्मेदारी उठाती है। तो वज़ीर ख़जाना साहब की बात दुरुस्त है, मैं उसको इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं इनसे ये गुजारिश करूँगा कि कभी इस चीज़ पर भी ध्यान दो जो शहबाज शरीफ साहब वादा किया करते थे इलेक्शन से पहले कि हम वजारतों में अखराजात कम करेंगे। तो क्या खुदा न खास्ता अखराजात कम करना क्या मना आ गया है कि हदीस और खुदा न खास्ता में मना आ गया कि अखराजात नहीं कर सकती हुकूमत कम? अब अखराजात कम करें। आपको जरूरी है कि आप ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है हुकूमतें अपने अखराजात, लोग जो है वो सहूलत ना होने की वजह से निज़ाम पे एतमाद नहीं करते, तो इसलिए आप कुछ ना कुछ चलाकियों से तो टैक्स ले लेते हैं, लेकिन ना कोई विलिंग नहीं होता टैक्स देने के लिए। ऑब्वियस और ऐसे इंसेंटिव्स नहीं है कि जिसकी बेस पे वो दें, या ताजर भी इसलिए नहीं देता कि होगा। अब मुझे ज़रा ये बताएं, सिंगल डिजिट वाला मामला है, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा, कितनी बेहतरी आएगी जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर सिंगल डिजिट अगर आ जाता है? तो शरह सूद कम हुआ है, तो अभी शरह सूद 12% है। बीच में कुछ बैंकों ने जोर से पैसे देने शुरू करे थे, अब कुछ टैक्स वगैरह कम कर दिया है बैंकों के ऊपर, अब देखते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में और खित्ते की सबसे महंगी बिजली हो, पाकिस्तान में खित्ते की सबसे महंगी गैस हो, जब टैक्स रेट्स ये हाल हो जो मैंने आपके बताएं, तो नई सरमायाकारी करना किसी के लिए बहुत मुश्किल है। तो यस, ये बात दुरुस्त है कि 13% पॉलिसी रेट हो गया है और इसके बाद 14% में लोगों को मिलने लगेगा, और अल्लाह करे मजीद शरह सूद कम हो। ठीक, तो यही तब सवाल है कि सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या करें, कौन से मेजर लें। एक दूसरा भी हम ये देख रहे हैं कि 436 अरब की सब्सिडी दी गई हुकूमत की तरफ से इन लास्ट 6 मंथ्स। ये जो सरकारी मलकियत में चलने वाले इदारे हैं
जिनके ऊपर इस वक्त हमें बड़ा नुकसान करना पड़ता है। आप भी अपने दौर में इस पर बहुत ज़्यादा बात करते रहे। अब 14 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से लेसेस जो है वो किए गए। अब ये ब्लैक होल कैसे बंद हो? ये जो सरकारी इदारे जो जिनको 400-400, 500-500 अरब रुपया जाता है, इसको किस तरीके से रोका जाए? कहीं तो इसको कहीं रोकना है, कहीं इस नुकसान से बचना है। अदल भाई, मैं पीएचडी करने के बाद अमेरिका से जब पाकिस्तान आया हूँ 30 साल पहले, तो जब से हम यही बातें कर रहे हैं कि सरकारी कंपनियों को नुकसान कैसे रोके। भाई निचकारी कर लो, जान छुड़वाओ, आपको क्या जरूरत है? ये दुनिया भर में होती है निचकारी। ये एयरलाइन हिंदुस्तान ने अपनी एयर इंडिया कर दी निचकारी, टाटा ने खरीद ली, वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर किया है उन्होंने जहाज़ों का। हमारी नीयत ही नहीं है निचकारी की, क्योंकि हम अपने हाथ से कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते। अब 14 रुपए का लाइन लॉसेस में नुकसान हो रहा है फी किलोवाट आवर, तो उसका तरीका एक ही है कि आप निचकारी कर लें, किसी के पैसे लगे होंगे तो काम होगा। ये क्या जो पावर सेक्टर था, इसको हमें माजी में भी ये करना चाहिए था या अभी भी यही करना चाहिए कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट लगाना चाहता है वो अपनी पावर खुद प्रोड्यूस करे, और रियासत बजाय इसके ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी जिसमें डॉलर भी है, जिम्मेदारियां भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, इल्ज़ाम भी हैं, ये सब अपने से अब उतारे और प्राइवेट सेक्टर ही जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स इस तरह पूरी करे? या करता तो बेहतर होता? योर टेक ऑन। ये पावर जो है ना, वो एक जिसको कहते हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत होती है पावर, तो इसलिए ये इसको नेचुरल मोनोपोली कहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि एक बड़ा पावर हाउस हो और सबको पावर दे दे, वो सस्ता पड़ता है। एक ज़माने में ये टेक्नोलॉजी थी। ठीक। अब जब से सोलर पैनल्स आ गए तो वो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, और अब इकोनॉमी स्केल उस किस्म की नहीं रही है। और जो हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन, तरसील और तकसीम, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में जो नुकसान होते हैं, उसके बाद हमारी इकोनॉमी स्केल कोई रहती नहीं है। तो बेहतर तो ये है कि हम इसको प्राइवेटाइज कर दें। प्राइवेट बिजनेसमैन जब अपने पैसे लगे होंगे तो वो मार्केट कंडीशंस को बहुत अच्छी तरह भांप लेगा। अभी जो दुनिया में बात हो रही है वो ये है कि नई स्टोरेज बैटरीज आ रही हैं। पहले लिथियम आयंस की आती थी, अब सोडियम आयंस की आने लगी हैं, और इन बैटरीज के तहत आप पावर को बड़ी सस्ती तरीके से स्टोर कर लेंगे। लिहाजा 5-7 साल के अंदर ये सारी, जो लोग कहते हैं कि जो सारी जो डिस्कोज और IPPs और इन सब की जरूरत खत्म हो जाएगी। लोगों के घर में छतों पे लगे होंगे सोलर, और थोड़े थोड़े सोलर सेल जो हैं वो इतने एफिशिएंट होंगे कि बिजली बना के स्टोर कर लेंगे, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे मोबाइल फ़ोन आने से आपकी फिक्स लाइन टेलीफोनी ख़त्म हो गई है, इस तरह आपके ये नए सोलर पैनल और नई बैटरीज आने से आपकी टेलीफोन, ये बिजली का महकमा ख़त्म हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि इसमें अभी भी मैंने सुना है कि हुकूमत 1700 मेगावाट लेकर आ रही है। इसको नहीं लेकर आना चाहिए। दियामीर भाषा ख़ास तौर पर वाटर रिजर्वायर ज़रूर बनाएं, लेकिन उस पर बिजली नहीं लगानी चाहिए। और आप बिजली के महकमे से जान छुड़वाइए, बिजली की चीज़ें बेच दीजिए, असासे बेच दीजिए बिजली। जो हो गया सो हो गया। ठीक, राइट, थैंक यू। राइट, थैंक यू सो मच। मिफ्ता इस्माइल साहब बात कर रहे थे मईशत के ऊपर, किस किस्म के इक़दाम करने की ज़रूरत है। हुकूमत को अखराजात कम करना चाहिए, पावर सेक्टर के अंदर मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी चाहिए, और सस्टेनेबल प्लान बनाने के लिए कुछ रिफॉर्म्स और कुछ कट्स लगाने होंगे। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ ताजिक एनर्जी मिनिस्टर मौजूद होंगे, जिनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान ताजिकिस्तान के ताल्लुकात पर, और वो पाकिस्तान में उनको खाना पीने में क्या पसंद है, पाकिस्तान का कौन सा शहर पसंद है, और ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर सयाहत का, सकाफत का और तिजारत का कितना पोटेंशियल है। एक ब्रेक के बाद से बात होगी। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ताजिकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ एनर्जी एंड वाटर रिसोर्सेज ऑनरेबल जुम्मा दलेर शफकीर, जिनको हमने आज इंटरव्यू करना है। और ये पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं, और पाकिस्तान के दौरे पर इनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, एनर्जी सेक्टर के अंदर पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का क्या पोटेंशियल है, और पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की जो बायलैटरल टाइज़ हैं, दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो किस नहज पर हैं और आगे किस तरफ जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। सर, thank you so much for giving your precious time. Thank you for having me today. Pleasure. Sir, if I would ask you that how's going your experience in Pakistan so far? I guess in short it's wonderful. It's been great to be back after 2 years short break. I used to travel to Pakistan for the last 15 years plus
and has been always a great experience, great pleasure. And in fact, today we had a 7th session of the Tajikistan-Pakistan Joint Commission. That I think also was a very important from the perspective that the previous one was 5 years ago. So today we, together with my counterpart, Minister of Power of Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Awas Ahmad Khan Laghari, we went through several important points. Our line ministries committees were present, and we very specifically were looking what it takes to boost the bilateral relationship in economical, social, cultural, scientific affairs, and we are all referring to the two important high-level events. These are the state visit of the President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Imam Ali Rahman, to Pakistan in December 2022, and the state visit of His Excellency the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Shahbaz Sharif, to Tajikistan in July this year, and where during this visit of His Excellency Prime Minister of Pakistan to Tajikistan, the strategic partnership agreement has been signed between the two countries. So the goal of the Joint Commission is to implement the visions that our leaderships have for our both nations. What is the current status of CASA 1000 project and how it can further strengthen trade between Tajikistan and Pakistan? Indeed, the CASA 1000, it's projects where the green energy of at least 1,000 megawatts will be transmitting from Central Asian countries, mainly Tajikistan, to Pakistan, to South Asia. And this will remain as a flagship project for our two countries. Fortunately, it has been well advanced. For example, the works in Tajikistan and in Kyrgyz Republic have been completed. We have recently connected the Tajik and Kyrgyz parts physically, and the progress in Pakistan is well advanced. It's going to be completed in months ahead. I'm looking forward to visit the project site shortly. And we aim to commission it in the next 2 years. We believe that the CASA 1000 will not only boost and transform the bilateral relationship of Tajikistan and Pakistan. However, it's going to play a much bigger role from regional point of view. Yeah, I just wanted to ask you this question, that how can these both countries can enhance, bilateral trades and at the same time regional connectivity through improved infrastructure? How they can make it more better, these two countries? Exactly. So again, to my point, if you look at the CASA 1000 projects having this connectivity, first of all, it's quite unique for the regions in terms of technologies and the scales. Now many other countries are looking at that experience, and they're calling on us to
share with them in these experiences. For example, similar to this one now, Central Asian countries are talking to Eastern European countries, particularly Uzbekistan, Kazakhstan, and Azerbaijan. They're talking about the similar projects which called the Green Corridor. That's number one, so we can share this, those experience, but we also connect those regional projects. There have been many initiatives on the regional infrastructure projects, but I would say that CASA 1000 remains the most advanced one, and I think we have to build on this one. If you look at that infrastructure, when we commission it, we will only utilize roughly 1/3 of it. What about the 2/3? And the 2/3 is about developing the hydro potential. So it's not only transmission projects per se, but it also will boost the utilization of the hydro potentials that both Tajikistan and Pakistan has, and unfortunately in both countries it's rather underutilized. So let's see it not necessarily just purely bilateral one, but it will also develop, boost other sectors. It is going to benefit other regional countries as well. Absolutely. I would say a bigger region, both Central Asia and South Asia. And I think the same goes true for the corridor that we're looking now. It is our leaderships have been, earlier this year, have been discussing and looking at a very important initiatives like a transport corridor between Tajikistan, China, and Pakistan, and we have to look at the other infrastructures. For example, what is very clear is that the distance, geographical distance between Tajikistan and Pakistan is really, really close. I think it is also important is that we look at the regional three-party or even multi-party trade agreements to make the region, to improve the connectivity of these regions. And for us as a Tajikistan, being a landlocked country, and I think we are a double landlocked country in the sense that our neighbors almost have no access to the let's say to the ports, except China having access to the ports in Pakistan will also be the game changers similar to CASA 1000 projects. Great. Excellency, how can Pakistan and Tajikistan collaborate to promote cultural exchanges, tourism, and people-to-people ties? I think this is the ultimate goal. Again, referring to our joint commission sessions today, we said that the both governments will work hard to remove the roadblocks, but we have to ensure that our people of both nations will benefit from it well. And here, I think what is also important, and we have agreed that we should put the private sector in front line and make them champion to implement those visions that our leaderships have for the nations. In terms of the ties, I think connectivity is important. You are referring to that we have we're sharing the culture, the language, the religion, but again, Pakistan is not a stranger to me. At least I don't feel here as a stranger, and I think I see that our cultures are identical. We are absolutely one. So this connectivity of people to people, it's really, again, coming back to what you said, the improved infrastructure. And I think the first and the immediate one is certainly starting sharing let's say, the cultural events we have been discussing today in terms of having
cultural days, weeks in Tajikistan. And for this one, I think the other important one is that we have now direct flights. And now the question is that how we will create the critical mass so that we bring more people traveling with each other. And I think increasing number of the direct flights is essential in connectivity, those dots. So what we are doing, it's actually we're not reventing a wheel. What we are doing is renewing what we have lost historically. So is there any initiatives have been taken in this regard? As you mentioned that direct flights are very important and some other factors as well. Are you people working on this? Yes, part of the seventh commission, the seventh session of the Joint Commissions will be the business forum, which will take place this week, where we'll bring the business people again. And one of the areas that we have to, let's say one of the platforms that we have been setting up, that our tour operators work out products so that we together promote those products. So have you ever been to Pakistan before? And if yes, how many times? And how many cities you have seen of Pakistan? Many. For the last 15 years, normally there was from dozens of the visits. I've been visiting, of course, Islamabad, but also given the nature of the works and businesses that I was involved, it was very much Gilgit-Baltistan and KPK, but also Karachi. Mainly for the business purposes, but however, of course, the Lahore. Have you visited Lahore also? Absolutely. Great. So, which city is your one of the favorite city in Pakistan? I guess I would say maybe two of them. It is Lahore from the cultural point of view, and it's actually Islamabad, because it's very greenery. It's very, I mean, it's a very comfortable place to be and meet the people. But I think the greenery is the one which always close to my heart. But so do you enjoy Pakistani food? Have you? Oh yes, absolutely. Tried the traditional foods of Pakistan? Yes, most of it, absolutely. No, I'm a fan of it, absolutely, and of course, try and never miss lassi whenever I'm here. Great. So, have you tried biryani and yes. paya and nihari of Pakistan? Nihari too as well, but I think chicken and mud biryani is my favorite one. Wow, great. But I also love the mixed tea here, but I don't know how you do it, but the bread is here also very, very fresh and tasty. Great. So, what do you think? How much potential Pakistan has? What is your observation after seeing Pakistan? That how much potential this country has, or these two countries can make things more better together? I think a lot. It's absolutely the way how I see it. It is Tajikistan can be the gates to the Central Asia for Pakistan, and vice versa. That Pakistan can become access to the port, which are quite important. Earlier today, we had very good discussions with the private sector representatives. And what was their main message is that, and I asked them, what are the enablers? And one of the enablers, they actually said that, let's look at the corridors, let's look at the, the platforms that will
simplify the process that will reduce the, let's say, the transportation cost, or even will reduce the timing of it. And they come up with a very, for me, simple but brilliant ideas that sometimes it doesn't require significant investment in infrastructure. I think it requires a vision and critical thinking of what immediately we can do in terms of removing let's say, the bureaucracy, but also building on the new technologies in terms of digitalizations, the entire process, bringing the transparency to this one. And this actually will also, what it means, we are the population of 11 million will have access to the one of the most popular country is in the world, like Pakistan and vice versa. The Central Asia is is home to the over 100 million people, and I think through this we can do. So we are geographically very close to each other, and we can certainly, by connecting these dots again, will not only benefit bilaterally, but also can become significant players regionally. Thank you so much, Excellency Juma Daler Shofakir, Honorable Minister for Energy and Water Resource, for giving your precious time. And I hope I pronounced your name correctly. Absolutely. Thank you, Mohammad Adil Abbasi. I think I did the same. Pleasure is all mine, sir. Thank you so much. जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का पोटेंशियल क्या है, कैसे ये दोनों मुल्क एनर्जी सेक्टर में और दूसरे सेक्टर्स में आगे बढ़ सकते हैं, बिज़नेस और प्राइवेट सेक्टर जो है वो क्या कर सकता है, और ताजिकिस्तान के लोग, ताजिकिस्तान की हुकूमत और ऑनरेबल मिनिस्टर पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, और उनकी हुकूमत पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती है, इन ख्यालात का जो है वो इजहार कर रहे थे। आई होप आपको इंटरव्यू जो है वो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।